So this is lecture 25 based on your third unit. Okay, so in this lecture we are going to discuss about the analog and digital I/O. So I/O stand for input and output. Okay, so जो भी इनपुट्स हमारे फॉर्म ऑफ एनालॉग का हो सकता है या डिजिटल का हो सकता है, सेम फॉर द आउटपुट, उनके बारे में हम स्टडी करेंगे. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन स्टडी अबाउट द सिग्नल्स, क्योंकि एनालॉग इनपुट एंड आउटपुट बेसिकली है कुछ फिजिकल क्वांटिटीज ही है जो हम दे रहे हैं. सो वेदर इट इज इन एनालॉग फॉर्म और इन डिजिटल फॉर्म, दो ही फॉर्म होते हैं. So we will discuss about this analog and digital I/O. So let's start with this analog and digital I/O. So before going towards to input and output, let's discuss about these two terms, that is your analog and digital. Okay. So whenever we talk about this analog, okay, analog means continuous. Okay, so continuous means, let's take one example of your sinusoidal wave. Okay, so let's see, this is t, the magnitude or the function is xt. Okay, so इस वेव फॉर्म में देख सकते हो आप. सपोज मैं इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की वैल्यू आपसे पूछता हूँ, ठीक है, इस बीच इस टाइम इंटरवल में. लेट्स सी, दिस इज 0, दिस इज t1 एंड दिस इज t2. So between the 0 and t2 time interval, okay, आप किसी भी पॉइंट पे कैलकुलेट करोगे, ठीक है, you will get one value over there. So whether you are calculating over here, I'm just mentioning the point. So if suppose you want to calculate at this point कि particular time पे magnitude क्या है, और in other words you can say कि आपको इस पॉइंट पे इस पे ओके. सो अगर आपको किसी भी पॉइंट पे वैल्यू कैलकुलेट करनी है, so you will get one magnitude at the particular time. Clear? So continuous means for each and every time you will get one value. Value means we are talking about the magnitude value. ठीक है, so उसको क्या बोलते हैं? Continuous. Now whenever we talk about this digital, means we are talking about the 1 and 0. We have two quantity 1 and 0. उसके अलावा हमारे पास कुछ भी वैल्यू नहीं, या तो हमारे पास 1 होगा या 0 होगा. सो डिजिटल में 1 0 बोलते हैं, और अगर हम एनालॉग की बात करें सो वी कैन से अगर 5 वोल्ट है तो वी विल कंसीडर एज ए 1, और अगर 0 मींस वी हैव 0 वोल्ट. ओके, सो यू हैव टू वैल्यू 1 एंड 0. उसी में हम अपना सारे डेटा को शो करते हैं. नाउ जो भी हमारे पास नेचुरल फॉर्म में अवेलेबल है सिग्नल्स, दे आर मेनली इन एनालॉग. ओके, सो हमारे पास जो भी फिजिकल क्वांटिटीज होती है वो मोस्ट ऑफ देम, ओके, ऑल आर इन एनालॉग. दैट्स व्हाई ओके कि हम एनालॉग की स्टडी करते हैं. क्लियर? बट जब हम प्रोसेसिंग करते हैं, okay, so we have to use the processors, so we have required digital values. So उस केस में जो भी हम प्रोसेसिंग में यूज करते हैं, we also do the analog processing, but we have advantages of digital, so we prefer these digital processors. So you have to convert this analog value into digital value. ठीक है? Sorry.
सो फॉर कन्वर्टिंग दिस एनालॉग टू डिजिटल, ठीक है, हमें जाना किससे, एनालॉग, अवेलेबल एनालॉग है, जाना किस में, डिजिटल में, बिकॉज जो भी हमारे पास प्रोसेसर है, ओके, जो भी प्रोसेसिंग यूनिट है वो उसमें डेटा आपको चाहिए 1 and 0 के फॉर्म में, सो यू हैव टू कन्वर्ट दिस योर इनपुट इनटू डिजिटल, और इनपुट जो फॉर्म है वो एनालॉग है, यू हैव टू कन्वर्ट दिस इनपुट as analog form into digital form. Okay, so you have required to converters. Okay, so for converting this analog to digital, you have required the converters, जो हम आगे पढ़ेंगे. So analog to digital converters, or sometimes you are required to digital to analog converts at the output side. ठीक है. So based on the application, आपको इन converters की requirement हो. ठीक है. Now अब अगर हम आगे बढ़े तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि एनालॉग से डिजिटल में हम कन्वर्ट कैसे कर रहे हैं इसकी. ओके, सो फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन सिग्नल ओवर हियर. ओके, सो यू हैव दिस सिग्नल, द फंक्शन इज t, लेट्स सी दिस इज xt. ओके, सो क्लियर, यू हैव दीज वैल्यूज, एक सिग्नल है, सो दिस इज योर एनालॉग सिग्नल. ठीक है, एनालॉग सिग्नल है क्योंकि टाइम के साथ कंटिन्यूसली वेरी कर रहा है. इस पॉइंट तक हम इसे कंसीडर कर रहे हैं कि इस पॉइंट तक ही हमारा जो सिग्नल है वो जा रहा है. ओके, सो नाउ यू हैव टू कन्वर्ट दिस एनालॉग इनटू डिजिटल. सो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ता है, यू हैव टू डू दी सैम्पलिंग. सबसे पहला पार्ट होता है सैम्पलिंग. ओके, व्हाई वी डू दिस सैम्पलिंग, फॉर कन्वर्टिंग एनालॉग सिग्नल इनटू डिस्क्रीट सिग्नल. डिजिटल में आप डायरेक्ट नहीं जा सकते. सो फर्स्टली यू हैव टू कन्वर्ट इनटू द फॉर्म ऑफ द डिस्क्रीट सिग्नल, देन हम कहां से जाएंगे, डिस्क्रीट टू डिजिटल. ओके, सो सैंपल्स, सैम्पलिंग का मतलब क्या है कि आपको सैंपल्स लेना है. ठीक है, सो लेट्स सी, आप ये सेकंड में वैल्यू थी, ठीक है, ये 0 से जा रहा था. सो 0 से यहाँ तक, लेट्स सी यहाँ तक वैल्यू है योर 5, 10, 15, 20, 25 सेकेंड. ओके, सो 0 to 25 सेकेंड्स पे अगर आप किसी भी टाइम पे आप देखेंगे तो यू विल गेट वन वैल्यू in the case of continuous. But now we are interested in samples, कि मैंने आपसे बोला है कि अब जो डेटा हमें देखना है आफ्टर 5 सेकेंड बाद ही देखना है. ठीक है, सो व्हाट वी डू, वी विल टेक दी सैंपल्स. सैंपल्स कहाँ पे ले लेंगे, आफ्टर 5 सेकेंड. 5 सेकेंड का हमने ले लिया. सो दिस इज योर 5, 10, 15, 20, 25. सो आपने क्या कर लिया, सैंपल्स कर लिए. सो आपने एक सैंपल बना लिया एट दी 5 सेकेंड, दूसरा 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, 20 सेकेंड एंड 25 सेकेंड. सो आपने ये सैंपल्स ले लिए कि वी आर इंटरेस्टेड ओनली दीज सैंपल्स, कि इन वैल्यूज इस पर्टिकुलर टाइम पे ही हमें मैग्नीट्यूड देखना है, बाकी जगह वी डोंट हैव रिक्वायर्ड. सो आपने इनको सैंपल्स में ब्रेक कर लिया. सो इन अदर वर्ड्स आप क्या बोल सकते हो कि एक्स एक्सिस जो थी उसको आपने डिस्क्रिटाइज कर दिया. ठीक है, सो यू आर इंटरेस्टेड ओनली ऑन दीज वैल्यूज 1, 2, 3, 4, 5, 6 वैल्यू. सो 0 सेकेंड पे क्या वैल्यू है, 5 पे क्या है, 10, 15, 20, 25. ओके, सो उस पे आप, सो दिस इज कॉल्ड, इस, अब हम क्या कर सकते हैं, इन अदर वर्ड्स हमारे पास सिग्नल क्या हो गया, वी हैव दिस सिग्नल कि एक वैल्यू हमारे पास यहाँ पे है,
एक वैल्यू यहाँ पे है, so 5, 10, 15, 20, 25. So this is called, this is t, this is x, n. Okay, n is the number of samples. 5 सेकेंड पे 10, 15, 20, 25. So this is called your discrete signal. Now, जैसे ही हमारे पास discrete मिल गया, now you have to convert into digital form. So for converting this into digital form, हम क्या करते हैं? अभी आपने क्या किया था? X axis को किया था. Now you have to discretize the Y axis. Okay? So Y axis मतलब Y axis को आपने level में. So let's see, this is level 0, this is level 1, this is level 2, this is level 4, 3, 4 और 5. आपने levels में break कर लिया. Clear? Now what you have to do, simple क्या करना है? You have to compare the magnitude. ठीक है? Obviously जो ये magnitude है, means जो ये point है, ये point दो level के बीच में कहीं ना कहीं आ रहे होंगे, या एक सिंगल वैल्यू पे आ रहे होंगे एक्सेक्ट. So just draw the line. आपने मैग्नीट्यूड को डिफरेंट डिफरेंट जो मैग्नीट्यूड आ रहे थे उनको वाई एक्सिस से मैप कर दिया एक तरह से. सो यू कैन से हियर कि वो किसी दो लेवल के बीच में लाई कर रहे हैं. सो आपको क्या करना है, यू हैव टू टेक दी वैल्यूज के वो कौन सा लेवल है. ठीक है. सो दिस इज लेवल 0, जैसे मैंने बताया था 0 से हम कहाँ तक जा रहे हैं, 5 तक हमने ले लिया, मैक्सिमम 5 तक आ रहा है. ओके. Okay, so now suppose if you want to, I want to compare this value कि जो 0 पे पहला सैंपल था, you can see here, ठीक है, this one, ये किस लेवल पे लाई कर रहा है, फर्स्ट सैंपल, that is we can say कि जो फर्स्ट सैंपल है वो लाई किस पे कर रहा है, लेवल 0. ठीक है. now for the second we can say कि अब जो सेकंड वाला है मीन्स जो 5 पे है, 5 पे है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 0 से. अब हम बात कर रहे हैं 5 सेकंड वाले लेवल 2, सैंपल 2. 5 सेकंड वाला है, यू कैन से दिस इज लाइन बिटवीन द लेवल 1 एंड लेवल 2. ठीक है, ये येलो कलर की लाइन देख रहे हैं. सो आपको क्या करना है, आपको ये देखना है कि लेवल 1 एंड लेवल 2, ठीक है, वो जो पॉइंट है वो 2 के नियर बाई है या 1 के नियर बाई है. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि 1 और 2 का जो मिडिल पॉइंट है वो ये है. सो आपको देखना है कि वो मिडिल पॉइंट से ऊपर है तो उसे हम 2 कंसीडर करेंगे, अगर वो मिडिल पॉइंट से नीचे है तो वी विल कंसीडर एज ए 1. सो फॉर दिस सैंपल at 5 second we can say the value will be level 0, level 2, क्योंकि ये 2 के नियर बाई है, हाफ पॉइंट से ऊपर है. नाउ इफ आई वांट कंप्यूटर कंपेयर दिस 10, तो 10 को हम क्या बोलेंगे,
3 और 4 के बीच में लाई कर रहा है, सो 3.5 से ज्यादा है वैल्यू, नियर बाई 4 है, सो वी विल कंसीडर, यहाँ पे लिख देता हूँ फॉर 10 सेकेंड लेवल 4, फॉर दिस 15 सेकेंड वी कैन से लेवल 3। ओके, व्हाई वी आर कंसीडरिंग कि यहाँ पे कुछ मिडिल पॉइंट है और मिडिल पॉइंट के नीचे हमारा 15 सेकेंड पे जो हमारा एग्जाम्पल है उसकी वैल्यू 3.5 से कम है, सो वी विल कंसीडर एज ए लेवल 3। ओके, सो सेम फॉर level at 20 second we can say that okay, this is level 3, and at 25 it is also same level 3। so आपने क्या किया, you have convert these values, जो सैंपल्स थे उन्हें लेवल में बांट दिया। now you can see here you have 1 2 3 4 5 6 सैंपल और 6 लेवल। ओके, 6 लेवल थे हमारे। अब इन 6 लेवल्स को आप कितनी बिट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? हाउ मेनी बिट्स रिक्वायर्ड? सो इजिली यू कैन से ओनली 3 bit required। okay, so 3 bit, why? from 000 to 111, so 000 001 010 011 100 101 110 111, you have 6 level। so अगर इसकी डेसिमल वैल्यू निकालेंगे, दिस इज 0 1 2 3 4 5 6 and ये 7, so you have only 6 level। so 6 level ये आपके, sorry 6 level means level 0 to 5। now you can see 1 2 3 4 5 6, so 6 level को you can represent with the help of the 3 bits। okay, now you can say here कि आपके पास जो लेवल है, लेवल 0 का मतलब क्या हो गया, means the value is for this is in the form of digital value is 0 0 0। लेवल 2, लेवल 2 के लिए वैल्यू क्या थी, 0 1 0। लेवल 4 1 0 0। level 3, all are level 3, so 0 1 1 0 1 1 0 1। सो डेटा आपका हुआ था एनालॉग फॉर्म में। नाउ अब आप जब रिप्रेजेंट करोगे, ओके, सो अदर वर्ड्स यू कैन से, मैं ये रफ कर देता हूँ, दिस इज द, ये आई थिंक आप सभी लोगों को आता होगा बिकॉज यू गाइस आर फ्रॉम आईटी डोमेन। ओके, सो इसे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है। इन अदर वर्ड्स वी कैन से दैट कि अब जो यहाँ पे वैल्यू हम लिख रहे थे, rather than showing this value we just लेवल 0 को कैसे करें, यहाँ पे वैल्यू क्या लिखेंगे, 0 0 0। इसे हमने लेवल 2 कंसीडर करते हैं, C 0 1 0 1 0 0, दिस इज 1 0 0 1 0 1 1 0 1 1, so you have to write it down these way। okay, so in this way we can convert this analog signal into digital signal। okay, now प्रोसेस हमने देख लिया कि कैसे हम कन्वर्ट कर रहे हैं। नाउ आई विल टॉक अबाउट सम सिग्नल्स। ओके, सिग्नल्स, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट सिग्नल्स, क्योंकि जो भी इनपुट होगा दैट विल बी योर फॉर्म ऑफ सिग्नल्स। सो सिग्नल्स अगर हम बात करें, सो वी हैव डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल्स। ठीक है, मेन कैटेगरी जो होती है वो हम पहले ही देख चुके हैं। सिग्नल्स जो होते हैं वो या तो हमारे क्या होंगे, एनालॉग फॉर्म या डिस्क्रीट
या लास्ट वन इज द डिजिटल। ठीक है, ये 3 कैटेगरी होती है। बट अगर हम देखें हमारे पास फर्दर जो सब कैटेगराइज किया गया सिग्नल्स को, सो वो हमारा क्या हो जाता है, योर इवन एंड ऑड, योर एक्सपोनेंशियल सिग्नल, साइनोसॉइडल, ओके, पीरियडिक and non-periodic signal, energy and power signal, okay, and different types के signal हैं, okay, deterministic and non-deterministic, okay, so different type signal है, आपको ज़्यादा डेप्थ में नहीं पढ़ना है, okay, so अब हमें जो उसमें बात करनी है, as a name suggests, analog and digital input output, अगर हम सेंसर की बात करें, okay, so analog signals हम कौन कौन, so if I talk about your physical temperature sensor, okay, so temperature is a analog signal क्योंकि वो continuously change हो रहा है, okay, pressure sensor, it is always continuous, जिस ड्यूरेशन के लिए आप अपना प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, बिकॉज एट ईच एंड एवरी टाइम यू विल गेट वन वैल्यू, ठीक है, सेम फॉर फोर्स, वाइब्रेशंस, all are physical quantity in the form of the your envelopes. So for sensor, if I talk about the input signal, so that can be your electrical signal, at output side. If I talk about this sensor at the output side, okay, sensor या transducer के, so that will be in the form of the electrical, okay, so output की बात करें at the output side, पहले input पे देख लेते हैं, input side, okay, so I told you these are the form, these can be in the form of analog and also in digital, okay, ये जो सब categories हैं ये दोनों ही form में हो सकते हैं, clear, so input side पे हम बात कर सकते हैं, we can say all are analog signal and that can be any physical quantity, like your temperature, pressure, force, vibration, anything, input side, ठीक है, light intensities also, okay, at the output side you will get electrical quantity in the form of V and I, voltage or current. Also you will get directly digital value like in optical encoder,
1 and 0. Okay, also sometime you will get this in the form of, sometimes you like frequency oscillation. Okay, so analog and digital IO. So these are the input and output signals we are applying at the sensor and we are getting at the output side.